being in power, they have faced the law and they have been punished. So ultimately, this is what constitutionalism is all about, so that you are able to prevent individual from the tyranny of the state. इसलिए जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, ये काम हम कैसे करेंगे, तो एक बहुत आसान सी योजना बनी जो हमने सीखा, और हमने कहा कि कुछ नहीं, सबके अथॉरिटीज को डिवाइड कर दो. हमारे पास लेजिस्लेचर है, हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, और हमारे पास जुडिशरी है. क्रिएट करो इसको कॉन्स्टिट्यूशन. इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, so that we can create constitutionalism and division of power, and within that division of power, due checks and balances. So legislature will be our law making institution. तो कानून बनाने का काम किसको दिया हमने? लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव को नहीं कहा कि तुम्हें कानून बनाना है. लेजिस्लेचर को कहा दैट यू हैव टू मेक लॉस. एग्जीक्यूटिव से कहा तुम इंप्लीमेंट नहीं करोगे जो कानून बनाएगा, ये अलग लोग होंगे. They will implement laws. So there will be law implementers. ठीक है? And judiciary को हमने कहा that you will be adjudicator of disputes. फिर हमने कहा you will be interpreter of the constitution. संविधान की इंटरप्रिटेशन आप करेंगे, और कोई भी डिस्प्यूट होगा उसको रिजॉल्व आप करेंगे, क्योंकि वो लीगल डिस्प्यूट है. लीगल डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन आपके पास से होगा. लेकिन अगर ऑल दिस पावर इज बेसिकली, इफ ऑल दीज पावर्स आर assembled in one institution, तो क्या बनेगा ये? Then that's not constitutionalism. Then it becomes totalitarianism. Total power in one body, one institution. Then the state becomes a totalitarian state. ऐसे में राज्य क्या बनेगा? This will be the classic case of a totalitarian state. So इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एटलीस्ट क्या होता है कि all organs get their powers from the constitution, and if they do anything which is contrary to the powers given to them by the constitution, then judiciary can invalidate it. है ना? तो वैलिडेशन कब है? जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं. दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, ऑल द थ्री ऑर्गन्स are created by the constitution. All the three organs are created by the constitution. That is they derive their powers. That is, they derive their powers and authority from the constitution. Comma, so they cannot violate it. तो यहां हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट is equal to limited government is equal to constitutionalism. That's the idea. Okay, so this is one basic idea that we need to keep track of. ठीक है, फिर मुझे आपको बताना है सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी, क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर मैंने बोला, तो आई विल टॉक अबाउट दैट आइडिया of separation of power. I also have to talk about a bit about small amount of basic structure. So that, why basic structure? Because basic structure is also a limitation on power.
ये इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जुडिशरी ने कहा बट दे कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या, देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन सेज पार्लियामेंट कैन अमेंड बाय फॉलोइंग 368, but when judiciary says no, even by 368 you can't amend the basic structure. It's a classic example of limitation on power. It's a classic example of a limited parliament, limited government, and it's a classic example of constitutionalism. Okay, so we'll carry this discussion tomorrow.